नोएडा के मार्वल स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के तीसरे दिन की शुरुआत बहुत ही शानदार रही, जिसमें पत्रकारिता के सकारात्मक पहलू एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय पर गंभीर रूप से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में अस्मी राजा, शिवानी पांडे, अनिर्बन रॉय, भारतीय प्रधान, मिस्र के कल्चरल काउंसिल डॉक्टर मोहम्मद शोकुर नाडा, वेनेजुएला के एम्बेसडर अगस्टो मोंटेल, गाम्बिया के हाई कमिश्नर जिनाबा जुगानी, आइसलैंड के एम्बेसडर स्टेफनासन सहित कई गणमान्य महानुभावों ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई और गणेश वंदना के साथ ICMA के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में सकारात्मक समाचारों को बढ़ावा मिलना चाहिए ताकि समाज के विकास में वो सहायक सिद्ध हो सके। हमें समाज के लिए उपयोगी सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने वाली न्यूज को मान्यता देनी चाहिए ताकि समाज को इसका लाभ मिल सके। Good morning everyone. Good afternoon rather. Om Gajanan Bhoot Ganadi Sevitam Kapit Jambo Phalchar Bhakshanam Uma Sutum Shok Vinashah Karikram Namami Vidneshwaram Pad Pankajam. What I have recited in Sanskrit is that, hey Lord, I am showering flowers on your feet and requesting you to bless me for the work which I have started today, and I hope, presume, believe and trust in you, and I am sure that you will bless me to complete my job with the one which I have taken today in my hand. And the fact is that this whole Global Festival of Journalism, which is the 7th edition, and this time the biggest campaign which we have picked up in this festival is about the positive journalism. It's a very tough job because the first chapter of journalism teaches you that if dog bites the man, it's not a news, but if a man bites the dog, it becomes a news. So probably it's a very old trend for all those journalists who have always believed in publishing and writing negative news, and we are here to change the pattern, to change the concept, to change the old traditions. It's very important to bring in the positive journalism on our upper hand. I still remember a few years back, we were talking to, it was a seminar of a journalism, and just by a chance, I just spoke like this. I said, why can't film news be on the front page? This was just a proposal to few of the newspapers who were attending that seminar, and they said it looks like a very interesting idea. And I'm very happy that this idea has been picked up by many major national newspapers, and they slowly and gradually started publishing the positive news, the film news on the front page of the newspapers. नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर अनिर्बन रॉय ने कहा कि वर्तमान वक्त में तकनीकी के बढ़ते हुए प्रयोग से प्रत्येक व्यक्ति आज पत्रकार की भूमिका निभा सकता है, बस उसे सत्य और असत्य का फर्क करना आना चाहिए। इससे समाज में समावेशी विकास को गति मिलती है। Good afternoon, Dr. Marwa, Your Excellencies, my colleagues, friends. Thank you for having me, and one wonderful welcome, and many congratulations for the event that's happening. I've spent close to 25 years in the profession, and I started off as a filmmaker and graduated to become a journalist. Now I am a digital media journalist. I think it's an amalgamation of whatever I have learned in terms of putting visuals, text, audio into one. As Shivani rightly said, that digital is slowly becoming the be-all and end-all of whatever we do, and especially in India with the advent of broadband and other digital tools that we have. And Dr. Marwa rightly said that, print. I begin my day with reading at least 2 or 3 newspapers, and that's a habit that's old and that's continues, and I hope that newspaper doesn't die. What has happened in my life is I've stopped watching television completely. Most of my media consumption, unfortunately or fortunately, is through social media, because I am a social animal, a social media animal. That's my profession also. But there is a risk, and I think the topic which says that, the 4th pillar of democracy under the threat of corporatization, probably yes, to the extent that, this profession is not easy. I mean, if you look at the developments that has been happening globally in the past few weeks,
I have lost many colleagues across the world who have lost their jobs in the digital world, and BuzzFeed, I've lost colleagues at BuzzFeed, I've lost colleagues at Vox, I've lost colleagues at many other organizations, but then they have moved on to do other jobs and do different interesting things. So the fact is that today, with the advent and the power of the digital device that we have in our hand, everybody is a journalist. सातवें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में शामिल हुए समाज के सभी प्रबुद्ध गणमान्य महानुभावों ने मीडिया के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने वाले मारवा स्टूडियो के संस्थापक संदीप मारवा की तारीफ करते हुए कहा कि मारवा स्टूडियो समाज में ऐसे पत्रकारों के निर्माण में योगदान दे रहा है जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए समाज निर्माण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रबुद्ध महानुभावों ने भी शिरकत की और अपने व्याख्यान में कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत एक बड़ी भूमिका भी निभा सकता है। आज संपूर्ण विश्व भारत की तरफ देख रहा है क्योंकि भारत में अनंत ऊर्जा मौजूद है। बस आवश्यकता है संभावनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उसका सही रूप से उपयोग करने की। इस कार्यक्रम में भारत और गाम्बिया एवं भारत और आइसलैंड के बीच 2 MOU भी साइन हुए। यहाँ फेस्टिवल में शामिल हुए सभी मेहमानों को लाइफ मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल मेमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। It certainly is. For the Gambia, we will have a lot of benefits in signing this MOU with ICMEI. In terms of exchange of students, in terms of film production, in terms of capacity building for the different areas, not just in film, but I think it's also in tourism and other areas. But I'm sure the MOU will be made available online so everybody can take a look at the kind of bilateral ties that we've established today with ICMEI. How would like in the future the relation between India and the Gambia? Because you are the ambassador of here. The relationship has been growing from strength to strength actually, this year will mark 10 years of the establishment of the Gambia High Commission in India, which we'll be celebrating with a visit from the Foreign Minister of the Gambia, Honorable Dr. Mamadou Tangara, who will be having, obviously, bilateral sessions with his counterpart over here, and will also be marking a reception towards the beginning of March, actually, to mark this occasion. So it's been going from strength to strength, and we've been receiving a lot of bilateral cooperation from the Gambia to India and India to the Gambia as well. बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने। मेरा नाम है डॉक्टर आसमी रज़ा, मैं प्रोफेसर हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जर्नलिज्म मेरा शौक़ रहा है। जर्नलिज्म होने के लिए सबसे बड़ी बात है यंगस्टर्स के लिए कि अपने सब्जेक्ट का बहुत गहन अध्ययन करें और एक एथिक्स जरूर लाइफ में रखें। चाहे आप किसी कॉर्पोरेट ग्रुप्स में भी काम कर रहे हो, जर्नलिज्म के बेसिक इश्यूज़ पर कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। ये मेरा मैसेज है, क्योंकि जो युवा वर्ग जो आज है वो बड़े जोश खरोश में है, उनके पास सारे एसेट्स हैं, सारे इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी साख पर डिपेंड करता है। आप ऐसा ना करें, ठीक है, कॉर्पोरेटाइजेशन का ज़माना है, प्राइवेटाइजेशन का ज़माना है, लोग बहुत सारी चीज़ों में इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज वही जर्नलिस्ट काउंट किए जाते हैं जो किसी कॉज के लिए खड़े होते हैं, किसी समाज की मुद्दे पर खड़े होते हैं। उन लोगों को कोई नहीं जानता है। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्टों का नाम दिखेगा जो उन्होंने बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठा लिए होंगे, लेकिन जाने वही जाते हैं, उन्हीं की पहचान, उन्हीं की बात मानी जाती है जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए किया है, इकोनॉमी के लिए है, पॉलिटी के लिए किया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में एक एथिक्स, नॉलेज और सब्जेक्ट का गहन अध्ययन, जो इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया जाता है आज के वर्ल्ड में, वो बहुत किस तरह से इंटरप्रेट हो सकता है, उसके बारे में कहना बड़ा ही मुश्किल है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये मारवा स्टूडियो में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होने से हमारा युवा वर्ग बहुत ही कॉम्पिटेंट है। पहले के आज से 30 साल के पहले बच्चों में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना हो जाए, जो कि आप इंटरनेशनल लेवल पर भी देख रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी देख रहे हैं। किसी भी निगेटिव पॉजिटिव इवेंट्स को समझने के पीछे आप अपना तर्क ज़रूर इस्तेमाल करें। जो भी अखबार छपता है, न्यूज़ पढ़ता है, उसके बारे में एक बार सोचे ज़रूर कि ये वजह क्या है, अच्छी बातें क्यों नहीं छपती हैं। अच्छी बातें होने से समाज का भला होगा। Well, here we are today in this celebration for International Journalism Day at Marwa Studios at the ICMEI. Very happy again to share the discussion on democracy on a very important topic, which is the fourth pillar of democracy, journalism, freedom of expression, and the question is freedom of expression at the moment being threatened by corporatization of the media.
And we see that, again, the topics of discussion of this important center of formation for journalists, for media people, for mass communications is certainly well guided on world affairs, on the development, on the needs of the development of society in general, of the media, of all the elements that make up news, television, newspapers, and today, most important of all, the electronic media. Electronic media today is taking everything. So I had the chance to express ideas that democracy is about being able for the majority of people, for all the people, for the great majority of people in every country. Democracy is at rule when people are informed, when people are conscious of their existence, when people know what to expect of the world. So the more people are informed, the more people are prepared, the more people